Hi guys, welcome to Studio Mentors. I have Saurabh with me. Highest package getter है rural का वेलिंकर मुंबई and he's got round about 18 लाख का highest package. रूरल में 18 लाख का पैकेज मिलना ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, बट यू नेल्ड इट. थैंक यू. थोड़ा आपका बैकग्राउंड बता दो यार, मतलब एंड कंपनी वगैरह कौन सा है उसके बारे में भी बात करेंगे. गिव अस लिटिल बैकग्राउंड. श्योर. So, hi guys, my name is Saurav Devgaria. I am a permanent resident of Dhanbad. So धनबाद से हो आप? धनबाद, हाँ. स्कूलिंग वगैरह सब धनबाद से किया. अच्छा. Then I went to Bhubaneswar to pursue my BTech. Mechanical engineering में मैंने. अच्छा, आप इंजीनियर हो? Okay. BTech किया. Then वहाँ पे I got placements. I got 2 placements out of which I chose to join Unisys. Okay. तो Unisys Hyderabad में I worked for around 9 months. Okay. तो उसके बाद I got better opportunity to work in CSIR Simfer, central government का जो organization है ना वहाँ पे. So that was the changing point for my life because while in Simfer I was I got an opportunity to work in different organizations. क्योंकि एक तो CSIR Simfer Digwadi campus, then I went to Pandaveshwar which is in ECL. Then I went to NCL, Dudichwa. Then I went to NTPC Uncha. Then I finally went to Lanco Anpara. So basically, staying in just one organization, I had the taste of all these: how they work, how they function, what are their expectations, अलग-अलग कहाँ पे, how you should work at your best. Okay. Give your best and get the best वाला चीज I learned from there. Perfect. So, or this was the time when all these places are in semi-rural or not a tier 1 city. All of not tier 1 city, right? So this was the time when I got a hands-on experience interacting with people who are right at the grassroots level and see the real India, the 70% of population जहाँ पे reside करता है. Right. That thing I got to witness different cultures. So basically, yes, that is my profile. After that, while I was in working, and I have a work experience of 3.5 years. 3.5 years. That's a good amount of work experience, right? So यहाँ पे I worked. So that is the reason you chose rural, क्या? Because तुझे थोड़ा सा एक idea था rural का. Yes. Not the sole reason, because working there for 3.5 years. Definitely इसके 2 reasons थे. पहला तो gain experience, definitely. Right. And second to fund my own education. Very so I have not taken loan वगैरह, घर से minimum amount लिया है. So that helped. These were the 2 main reasons जिसकी वजह से मैंने काम किया. So coming to selecting rural, to be very frank, I had selected other options also. Okay. जब आप apply करते हो, you get multiple options. Rural was one of them. But right now, sitting here with you, I can tell you, मतलब बहुत clarity से कि rural was the program for me. Oh, okay, nice. Because looking at my background also, जैसा मैंने वो देखा है. So what I had, I think, मेरे according मेरे पास क्या था ना, I had the taste of a corporate in Unisys Hyderabad. Then I got to see the world from a government organization's point of view. उसके बाद जो अलग-अलग जगहों पे रखा, तो all of that build me. धीरे-धीरे it started helping me, increasing my horizon or different perspectives से दुनिया देखना. So I chose rural, and right now I'm here with you. परफेक्ट. बार ना बच्चे ये पूछते हैं कि रूरल में अगर हम MBA करते हैं वेलिंगर से, तो क्या हमें रूरल में ही जॉब मिलेगा क्या? गांव खेड़े में जाके गांव जॉब वगैरह करना पड़ेगा क्या? है ना? थोड़ा इसके बारे में बता दो, बिकॉज ही इज अ रूरल गाय, रूरल एज इन रूरल MBA गाय, एंड ही इज गॉट अ प्लेसमेंट इन Schindler एंड ही इज इनटू ऑपरेशंस. तो जैसे मैंने आपके हेड से बात करी थी, रचना मैम से बात हुई थी हमारी, मैम ने भी कहा था डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल्स मिलती है और यू आर अ लिविंग एग्जांपल ऑफ इट. कैन यू गिव अस लिटिल आइडिया कि यार रूरल में सीखने के बाद आपको बाकी जगह पे भी जॉब्स मिल सकती है क्या? So basically sir, I'll tell you, this is a myth कि अगर आप रूरल से कर रहे हो तो you'll just end up working in farms or remote areas. सही बात है. That is not the truth. Absolutely right. That is not the truth, I'm telling you, because once you pass from actually the vision of Wellington's rural management program is to create corporate managers with rural insights. Exactly, वो तो जरूरी है. जैसे मैंने आपको बताया ना, 70% of the population is in rural. So one must have the insights. Because urban market is kind of getting saturated. True. So companies are now looking for the tier 2, tier 3 cities or even rural areas to expand करने में, क्योंकि उनके expand करना है, growth सबको चाहिए. So वहाँ पे बहुत huge untapped potential है. So one of the USPs of rural वहाँ पे. And now coming to the placement वाला चीज की, one need not worry. अगर प्लेसमेंट हो जाएगा, प्लेसमेंट हो जाएगा, एंड
one might not end up working in a remote area. ये कोई necessity नहीं है. Just because आपके certificate में rural mention है नहीं, that tells कि you have the insights. What's your job location? अभी तक डिस्क्लोज हुआ है? अभी तक लोकेशन आया नहीं. हाँ, बट जहाँ बात है शिंडलर की, शिंडलर will be posting in tier 1 cities only यार. Most well, but actually my internship, I got a PPO. I converted it in PPO. So my internship location was Indore. Indore is not a tier 1 city. But yeah, it is not Gaon also. Exactly. And the funny thing is that Indore is a city जहाँ पे, you know, it is not like Mumbai. Mumbai is growing like this. हाँ. There are not many skyscrapers. Right. So now question arises, Schindler वहाँ पे क्या? So there are multiple places. Bungalows में people install lifts. छोटे hotels में install lifts. Very there true. is a huge scope. Very true. Very true. Good यार. So guys, again coming back to the same point. अगर आपको rural management भी मिलता है वेलिंगकर में, it is always good. Like I would recommend you that if you want to get into Wellinger and if you get rural management, take it, to be very honest, rather than किसी और कॉलेज का which is way below Wellinger ना रैंकिंग में, उसका कोड प्रोग्राम लेने से अच्छा है आप रूरल ले लो या फिर हेल्थ केयर वगैरह ले लो, बिकॉज अम्ब्रेला प्लेसमेंट है और वो काफी हेल्प करता है. पॉइंट आई वाज गोइंग टू कम कि हमारे में अम्ब्रेला प्लेसमेंट है. व्हेन अ कंपनी कम्स, all the people, all the students from all the backgrounds are eligible sit together for the placement. Yes, अगर बहुत exceptional cases ना हो तो fantastic, so all of them eligible. Cool. Sort of last question for the day for you man. मुझे ऐसे 2-3 चीजें बता दो जो बच्चों ने करनी चाहिए to get a highest package in the B school या फिर top 5 packages in the B school. तो अगर हम पकड़े कि भाई रूरल का 18 लाख का नाउ हाईएस्ट है, तो टॉप 5 में 15-16 लाख तो आ ही जाएगा. ये करने के लिए बच्चों ने क्या करना चाहिए? I would say सबसे पहला ना you will learn a lot of concepts, academic concepts. We will learn a lot of concepts, but you know we have to keep this in mind कि वो concepts को ना we don't mug up या फिर we don't understand just for writing on the exam. Writing the exams and getting the grades. You have to internalize it. Exactly. You have to apply it. Exactly. Apply. अगर आप ऑपरेशंस का पोकायो के पढ़ रहे हो तो आप उसको किचन में अप्लाई करो, आप उसको अपने गैरेज में अप्लाई करो, काइजन वहां पे अप्लाई करो, कैसे आप बेटर इंप्रूव कर सकते हो अपने ऊपर अप्लाई करो. वेरी ट्रू. व्हाइल फॉर्मिंग योर रेज्यूमे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करो. अगर एक कंपनी के बाद दूसरे कंपनी में डाल रहे हो तो कांस्टेंट इंप्रूवमेंट. सो बेसिकली यूज द कांसेप्ट्स एंड इंप्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, not only on papers. पहला वो है. Second, I would say ना don't run after confidence, run after clarity, because जब clarity रहेगा ना confidence will बोलते ना झक मार के पीछे आएगा. Exactly, that is the point. बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को clarity नहीं होती है. Exactly. हमें confidence होता है पर हमें clarity नहीं है. तो confidence का use ही क्या है when you don't know what to do. Right, so that is a very good point. ये मैंने बहुत कम लोगों से सुना है कि you should have clarity over and above confidence, because you have a clarity you get the confidence. Good point. Really appreciate that. And any other point? And last मैं बोलूँगा कि once you embark on this MBA journey, right from the day one your hands will be full. एक assignment के बाद दूसरा assignment, एक deadline के बाद दूसरा deadline. So you need to have a perfect work-life balance. मतलब you need to learn how to डिटॉक्स योरसेल्फ या फिर थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा सा चिल करो. काम करते हुए भी कर सकते हो. व्हाइल यू आर वर्किंग फॉर द असाइनमेंट यू कैन जैम ऑन योर फेवरेट सॉन्ग. ट्रू. हर एक का अपना अपना फंडा है. एग्जैक्टली, है ना. इट्स नॉट नेसेसरी आप पार्टी करो हर रात, पढ़ाई करोगे कब. यस, वर्क हार्ड का एक वो चलता है, बट आई थिंक वर्क स्मार्ट या वो ज्यादा जरूरी है. दैट इज राइट. ऑल ऑफ दीज आई थिंक विल हेल्प यू. परफेक्ट. हैव यू बीन अ टॉपर और समथिंग लाइक दैट? व्हाट इज इट? इट्स एकदम एवरेज एकेडमिकली, राइट? बिल्कुल, आई हैव नेवर बीन एन. बट यू सीम टू बी very sincere, if I'm not wrong. अगर मैं मैम से भी पूछूं तो जहाँ पे what is needed I do what is needed. Perfect. That's the key to success, isn't it? Yes. ठीक है सौरभ, thank you so very much यार, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you sir. Thank you so much guys. Living example. You used to follow my videos ना? Yes. By the way, I would like to tell you, I have not taken any formal coaching या कुछ भी when I was working, when I was preparing. So when I was working, उसी time से preparation start हुआ था, but something happened at my home जिसकी वजह से I had to take a 1 year drop. So I could not leave home या फिर I could not take any coaching. So वहाँ पे he came as a savior. I saw almost all the videos starting from YouTube में एक वो आता था option. ऊपर sort by the oldest. I even checked that also. अरे यार, thanks. मतलब कुछ ऐसा ज्ञान जो previous batch को मिला, maybe I missed on something. Right. So while having breakfast, मेरा दिन का routine, breakfast time was the time when earphones in, look at your video. उसके बाद कोई concepts का अगर कुछ दिक्कत हो, I used to solve them. So you helped me a lot. Basically where I am. ये पूरा तुम्हारा hard work है. I'm just a mediator, but it feels good at the end of the day कि बच्चे यहाँ तक पहुँचे. And he's a very simple guy, man. He's a very simple guy.
So you've done a great job. Thank Thank you. you so much. Thanks for the time.